Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of HR01, that is talent management. So today we will discuss our next topic and it is strategic view of recruitment and selection. What is the strategic view of recruitment and selection? And it is the last topic of your unit 2. So we will complete it today. So what is it? Strategic view of recruitment and selection. As you all know what is recruitment, what is selection. So we will discuss its strategic view. The issues to be taken into consideration as far as strategic recruitment and selection are concerned can be understood well when we take an organization in question. The recruitment and selection of human resources certainly have a very important impact on how well an organization can successfully materialize its business strategy. तो किसी भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरा का पूरा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव एंड हाउ दे आर using it or applying in an organization. Also at this stage, organizations face an important question of whether it should develop its existing employees in such a way so as to fulfill its vacancies requirements, or should it try to acquire or hire human resource from outside the organization in order to build a sound staffing policy. Organizations develop guidelines around these two major challenges. अब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई स्ट्रेटेजी बनाएगी, और यहाँ पे हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इट इज टोटली रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. सो देयर आर टू काइंड ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वो चैलेंजेस हैं क्या जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं हम उन्हीं से ही वर्क ले लें, हमें आगे हायर ना करने पड़े, और क्या हमें रियल में हायर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन करने चाहिए या करने पड़ेंगे. सो दीज टू आर द क्वेश्चंस. इट इज whether it should develop its existing employees in such a way so as to fulfill its vacancy requirements. क्या वो अपने ही existing employees को इस तरीके से develop कर ले कि जो अभी vacancy requirements है हम अपने existing employees से fulfill कर ले, या फिर हमें really में outside से new employees, new recruits करने चाहिए. So this is the question. Then so there are some points in it. That acquiring human resources, organizations usually take help of the three strategic approaches of recruitment and selection. Organization mainly acquiring human resources में mainly three types of strategic approaches use करती है for recruitment and selection. What are that? Namely traditional approach, staffing as strategy implementation, and strategic staffing as strategy formulation. So these are the main three approaches. First one is traditional approach, then for recruitment and selection, then staffing as strategic implementation and staffing as strategy formulation, or to develop employees for successful implementation of their business strategies. तो organization business strategies को successful बनाने के लिए हमें ये three approaches को ध्यान में रखना होगा while we are acquiring our human resources. So we will discuss it in detail. So what is traditional approach? Traditional approach to recruitment and selection give very little or no importance to business strategies. It downplayed the link between staffing decisions and organizations' business strategies. The aim was to find a person who could fit the job perfectly and recruit people who could perform the best in the given job. So as a name, traditional approach ज़्यादा ध्यान क्या, सिंपल जो पुराना टाइम से चलता आ रहा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, उसी तरीके से वो लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे, उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे. सिंपल जो पर्सन उन्हें बेस्ट लग रहा है पर्टिकुलर जॉब के लिए उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके उसको वहां पे प्लेस कर देते हैं. The aim was to find a person who could fit in the given job. The use of this approach was also seen extensively during the First World War, where cognitive ability tests were used by armies of US, UK and France. अब mainly ये approach कहाँ देखी गई? First World War के टाइम पे देखी गई, जब वहाँ पे cognitive ability देखी गई, means brain test हुआ armies का, कौन-कौन सी country की? US, UK and France का, where soldiers employed were simply placed in a job where they were best suited without taking into consideration the strategies. तो उन्होंने इस टेस्ट से क्या किया? कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट से उन सोल्जर्स की टेस्ट, जब कॉग्निटिव टेस्ट किया गया तो ये देखा कि उससे ये पता चल गया कि किस सोल्जर को कौन से जब प्लेस पर या कैसे क्या जगह सूट करनी है, उसी
और ये दैट इज व्हाई दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। सिंपली कॉग्निटिव टेस्ट से उन्होंने ये फाइंड कर लिया कौन कितना कैपेबल है, किस तरीके की पोस्ट पर है, किस जगह प्लेस कर सकते हैं। ये उन आर्मीज का टेस्ट हुआ और ये फाइंड करने के बाद उन सोल्जर्स को उनकी जगह पर प्लेस कर दिया गया। So this was a very successful practice and became extremely popular among organizations other than army in short span of time. तो ये सिर्फ आर्मी का ही आर्मी के लिए नहीं था, बाद में ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत पॉपुलर अप्रोच बनी और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको फॉलो किया और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस इसको फॉलो करती भी हैं. While this approach may be benefited organizations in several ways, but it is considered non-strategic because it completely ignores business strategies. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको फॉलो कर रही हैं, बट फिर भी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी नहीं है, एक नॉन बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे और स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे. सो दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ नॉन स्ट्रेटेजिक अप्रोच and because it ignores business strategies. A business strategy has to be taken out from the conceptual position it was placed in traditionally and put in prominent place. The following two strategies of staffing as strategy implementation and staffing as strategy formulation were developed thereafter and emphasized towards recruiting and selecting within an strategic framework. तो जो पहली अप्रोच बनाई गई एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्स में वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी और वो एक तरीके से नॉन स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी थी. वहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में कोई बात नहीं होती थी. इसीलिए आगे फिर दो और स्ट्रेटेजीज बनाई गई, दैट इज स्टाफिंग एज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टाफिंग एज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. ये बनी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रख के और इसी के थ्रू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस आगे किया गया. So we will move to staffing as strategy implementation. This is the second part. To be successful, an organization is forced to take a strategic approach to recruitment and selection, especially in long term, as following the traditional approach is not practical in present scenario with the heightened competition. Organization को successful होने के लिए staffing as strategy implementation approach को follow करना चाहिए for recruitment and selection process. और ये मेनली लॉन्ग टाइम स्पैन के लिए यूज होती है और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सारी चीजें नहीं थी. इन द प्रेजेंट सिनेरियो विद द हाइटेंड कंपटीशन दिस अप्रोच सीज स्ट्रेटजी एज फिक्स्ड एंड एम्प्लॉयज आर द वेरिएबल एक्सपेक्ट. ये वाली अप्रोच ये बताती है कि स्ट्रेटजी तो फिक्स्ड है बट एम्प्लॉयज वेरिएबल हो सकते हैं. दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट एवरी बिजनेस हैज बिजनेस स्ट्रेटजी which remains fixed. ये पॉलिसी इस चीज पे फोकस करती है कि सभी बिजनेसेस की अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं और वो स्ट्रेटजीज फिक्स्ड होती हैं. Employees have to be recruited and selected based on how well they will be able to perform their jobs in order to be successfully able to implement the fixed business strategies. और उन fixed business strategies के अंदर हम एम्प्लॉयज से वर्क कराते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ये जज करती हैं कि क्या उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए वर्कर्स प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. बट बिजनेस स्ट्रेटजीज आर फिक्स्ड, दे हैव टू फॉलो दैट. इन सच एन अप्रोच the policy of business must be to design a recruitment and selection process that will be successful in fishing out employees who suit the organization so as to materialize this business strategy profitable. अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हमें बिजनेस पॉलिसी बनानी चाहिए और उस बिजनेस पॉलिसी के अंदर हमें प्रॉपरली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को डिजाइन करना चाहिए जिसमें हम ये देख सके कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके की जॉब के लिए सूटेबल है, उसको वहां प्लेस किया जा सके और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो किसी भी यूज के नहीं है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, उन्हें भी फिशिंग आउट किया जा सके जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे अपने गोल्स अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और प्रॉफिट अर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी. सिंपल है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी. देन इट शुड फाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और तब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को फाइंड आउट करेंगे एज वेल एज एबिलिटीज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजीज. तो हम सारी चीजें देखेंगे, नॉलेज, स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, देयर एबिलिटी टू डू अ वर्क, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को फॉलो वो कर पाएगा या नहीं, इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखेगी. फाइनली इट शुड रिक्रूट एंड सेलेक्ट ओनली those candidates who are fit in the desired criteria. और लास्ट में क्या किया जाएगा,
बिजनेस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग या उसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं एंड दे विल बी फाइनलाइज्ड. Then next approach is staffing as strategy formulation. What is it? It is a competitive environment. An organization constantly faces a number of threats from its competitors. यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है स्टाफिंग एज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में. ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या है आज के टाइम में? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिशन फेस कर रही है एंड हैव अ नंबर ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स. Also, any business provides varying opportunities that need to be exploited at the earliest in order for an organization to flourish. To completely utilize its human resources, organizations use this approach wherein the capabilities of candidates to be recruited are considered. अब organization में human resources का proper and full utilization हो सके तो इस approach में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के टाइम पे प्रॉपरली कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटीज को जज किया जाता है. द प्राइमरी कंसर्न हियर इज टू मैच द क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट्स विद द बिजनेस स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में उस टाइप की क्वालिटीज हैं या नहीं. तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि द पर्सन इज फिट विद आवर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटजी और नॉट. This approach sees employees as a variable aspect. Another major difference here is that strategy is also seen as a variable aspect, unlike the previous approach. The business policy here is to recruit employees based on their personal qualities and traits. यहाँ पे जो employees को recruit किया जाता है, ये recruitment process किस चीज पे based है इस strategy का? Mainly on their personal qualities and traits. What kind of personal qualities or traits an individual or a particular employee have? Like they should have KSAOs like knowledge, skills, abilities and other characteristics. So these all things are to be analyzed here while doing recruitment and selection. So these are some of the things which we have to be kept in mind. So first strategy is traditional approach. Then we will have to go with staffing. This is acquiring human resource. First is traditional approach. Then second one is staffing as strategy implementation. And then third one is staffing as strategic formulation. So we did all these things in our this topic, that is strategic view of recruitment and selection. So this all in our unit 2. I think आपको क्लियर भी हो गया होगा. यहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक्वायर करने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखा. ट्रेडिशनल, स्टाफिंग विद इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड वन इज स्टाफिंग विद formation, strategy formulation. So these 3 we should have to be kept in mind while doing strategic recruitment and selection. So this is all in unit 2. So now we will move to our next unit, that is unit 3, and our topic is unit 3. Topic is recruitment and selection process introduction. So we had already discussed about what is recruitment and what is selection. So today we will start with our next unit, that is unit 3, and in this we will discuss the process of recruitment and selection. Recruitment and selection is an important operation in HRM designed to maximize employee strength in order to meet the employer's organizational goals and objectives. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइमली अचीव करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है. In short, recruitment and selection is the process of sourcing, screening, shortlisting and selecting the right candidate for the filling the required vacant position. तो in short अगर हम बात करें कि recruitment and selection होता क्या, तो recruitment and selection is the process of sourcing, screening, shortlisting and selecting the right candidate for filling the right position in an organization. So what is the scope of recruitment and selection? The scope of recruitment and selection is very wide and it consists of variety of operation. कोई छोटा scope तो नहीं है, it is a very wide scope. Resources are considered as most important assets to any organization. किसी भी organization के लिए main important asset उस organization का है resources, and resources, human resources are the main assets. Hence, hiring right resources is the most important aspect of
रिक्रूटमेंट। सही पीपल, सही इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके सही जगह प्लेस करना तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Every company has its own pattern of recruitment as per their recruitment policies and procedures। और ये भी आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट पैटर्न सेम नहीं हो सकता, हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अलग हैं, तो इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी अलग है। अपनी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को करती है। स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इंक्लूड्स फॉलोइंग। इसके स्कोप में कुछ चीजें आती है, व्हाट आर दैट, कुछ पॉइंट्स हैं which comes under the scope of recruitment and selection, that is dealing with the access or shortages of resources। access ज्यादा resources है तो कैसे डील करें, कम है तो कैसे डील करें। preparing the recruitment policy for different categories of employees। हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर पॉलिसी रिक्रूटमेंट की बनी। Analyzing the recruitment policies, processes and procedures of the organization। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते रहना चाहिए। Identifying the areas where there could be a scope of improvement। If there is a need of improvement, then an organization should take a step to do that। Streamlining the hiring process with suitable recommendation। suitable recommendation के थ्रू हम अपना हायरिंग प्रोसेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। Choosing the best suitable process of recruitment। और हमें क्या करना है, choosing the best suitable process of recruitment for effective hiring of resources। best to best हमें recruitment process अप्लाई करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्लाई होना चाहिए जिसमें हम बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकें। So here we had mentioned any organization wants in future to be in good and safe hands, hence hiring the right resource is a very important task for any organization। आगे भी ऑर्गेनाइजेशन सेफली वर्क करे, कंपटीशन को फेस कर सके, तो इन सब चीजों के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट रिसोर्स को हायर करना मेन टास्क होता है। सो देयर आर स्टेप्स एंड देयर इज एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप इज sending the resignation communication message to HR with request for initiating the recruitment process। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, HR को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें HR रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करना चाहिए। देन मैनेज HR डायरेक्ट द हायरिंग टीम टू स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे HR जो टीम है उसको मैनेजर डायरेक्ट करेगा अपनी टीम को, किस लिए, टू स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दिस इज स्टेप नंबर 2। देन लॉगिंग इनटू द एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट एंड कॉन्टैक्टिंग डिफरेंट रिक्रूटर्स। अब यहाँ पे हम डिफरेंट वेबसाइट से ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड है, लॉग ऑन करेगी और साथ ही साथ डिफरेंट रिक्रूटर से कॉन्टैक्ट करेगी। देन इन फोर्थ स्टेप सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग द रिज्यूमेज ऑफ द कैंडिडेट्स। और यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ स्टेप में सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग डिफरेंट रिज्यूमेज ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स। देन इन फिफ्थ स्टेप वी विल रिसीविंग अ रेलेवेंट रिज्यूमे। जो हमारे अकॉर्डिंग हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट रिज्यूमे, हम वो रिज्यूमेज ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगी और फिर उन रिज्यूमेज में से ही ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वन शॉर्टलिस्ट करेगी, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द रिज्यूमे। देन इन स्टेप 7 सेंडिंग द शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमेज टू द डिपार्टमेंट मैनेजर। जिस भी डिपार्टमेंट मैनेजर है, जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशन है, वहां पे वो शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमे उस डिपार्टमेंट मैनेजर को भेज दी जाएंगी। देन स्केड्यूल इंटरव्यू डेट्स। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराने की क्या क्या डेट्स रखनी है उसका प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाएगा। देन कॉलिंग द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। उसके बाद क्या स्टेप होगा, हम इंटरव्यू के लिए वो शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमे कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट मैनेजर के अकॉर्डिंग किसको कॉल करना है, उनकी चीजों को ध्यान में रख के हम इंटरव्यूज के लिए उन कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। देन interviewers complete the feedback from and the feedback is shared with the HR। अब इंटरव्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद फीडबैक होगा और वो फीडबैक हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का HR के साथ या HR के साथ शेयर किया जाएगा। Then 11th step, this process repeats for many candidates till the best candidates are finalized। और ये प्रोसेस स्टेप नंबर 10 है, इसके ऊपर का सारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कैंडिडेट नहीं मिल जाता या किसी एक कैंडिडेट को वो फाइनलाइज नहीं कर लेंगे। Then the HR teams negotiates the package and compensation।
अब जब सेलेक्ट हो गया फाइनली कोई भी एक कैंडिडेट, अब HR टीम नेगोशिएशन होगा रिगार्डिंग देयर कंपनसेशन और सैलरी, उस पार्ट में यहाँ पे डिस्कशन चलेगा. देन इन स्टेप नंबर 30 फाइनल कंफर्मेशन एंड एग्रीमेंट टू बी साइन. फाइनल कंफर्मेशन दी जाएगी. एंड देन स्टेप नंबर 40 सेंड ऑफर लेटर. ऑफर लेटर कैंडिडेट को दिया जाएगा और लास्ट में offer accepted by a particular individual or a candidate. So this all comes under the process of recruitment and selection. So these are total 15 point steps in the process of recruitment and selection. So this is the first topic of our unit 3, the process of recruitment and selection. And I think this is all for today. Thank you. Have a nice day.